start. Happy day, very good morning boys and girls. I welcome you all to yet another session of या फिर इकोनॉमिक्स के अब जाके लेके आना पड़ा इकोनॉमिक्स के लेक्चर तक देंगे. Yet another session of secretarial practice, starting with the discussion. We have earlier discussed about the functions of financial market. फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन के साथ विद द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, अब आगे जो डिस्कशन हमें करना है दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड broadly as money market and capital market. The financial market can be broadly classified as money market and capital market. Business एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिजनेस में दो तरह के फंड रिक्वायरमेंट्स होते हैं. एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिजनेस में दो तरह के फंड रिक्वायरमेंट होते हैं. व्हाट आर द टू फंड रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली इन द बिजनेस? Actually, in business we require two sorts of funds, that is short-term funds and long-term funds. Funds which are required for a short period are called as short-term funds. Funds which are required for a longer period are called as long-term funds. Yes or no? Right? But when we look into things, short-term funds are required for meeting which capital requirement? Money requirement नहीं मेरी माँ, working capital requirement. Literally भूल गए तुम पढ़ाया हुआ पहले चैप्टर का क्या किरण? Funds which are required to fill the working capital requirements are short-term fund requirements, and funds which are required for a longer period for buying the capital assets of the company are called as long-term funds, and they are classified as fixed capital requirement. Yes or no? Sources of working capital, है ना? Sources of working capital: cash credit, bank overdraft, trade receivables, bill of exchange are all the working capital requirements or sources of working capital, right? Now, the financial market is an intermediary or a facility where the investor and the borrower of the funds meet, right? Now we are talking about business. Business talks about the borrowers, right? Now, borrowers or the business have two sort of fund requirements. One is short-term funds and long-term funds. The financial market is broadly classified. The financial market is broadly classified as money market and capital market. थोड़ा बहुत अगर हम नाम पे स्ट्रेस दे तो नाम से ही सारा मतलब समझ में आता है. मनी, मनी मीन्स कैश. व्हाट इज मनी? Commodity used as a medium of exchange is money. So money or cash is a liquid asset, you know, and liquid assets are for a very short term. So undoubtedly, अगर literally अगर इसका meaning देखा जाए तो money is for short period. Money is for short period. Whereas when we see capital market, these funds are required for meeting of the capital requirements or capital buying the capital assets of a firm. We buy capital assets for a short period or long period, longer period. So wherever we buy or we borrow funds for a longer period, that market is called as capital market, and the fund requirements are long-term fund requirements. So the financial market is a market which acts as an intermediary between the investor and the borrower of the funds. The borrower of the funds have two kind of requirements. Either he has short-term requirements to meet the working capital requirement, or he has the long-term fund requirements meeting up the capital requirement. So if you see and classify, the money market will fulfill the short-term fund requirement, as money market is a market where the funds are raised and procured for a period of less than 1 year. For a period of less than 1 year. Less than 1 year. और एक साल से जब ज्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसे बोरो जिस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं एक साल से ज्यादा, दैट वी कॉल एज द कैपिटल मार्केट. Whenever funds are traded for a longer period of time,
They are traded in the capital market. The financial market facilitates the trading of the instruments or the securities which are issued by the companies. There are various kinds of instruments which are traded by the company. As in accounts, you will be learning a new chapter that is called as bill of exchange. It's an instrument of exchange. It's an instrument of exchange where goods can be exchanged by just creating a bill of exchange. But this bill of exchange can be traded in which market? The money market or the capital market? The answer is money market, because the fund requirement or capital requirement of the money actually मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, literally तुम हम बातें कर रहे हो. How is that possible, जीजा? Come here fast. बाहर जा, जल्दी आ, जल्दी आ फटाफट. So bill of exchange are the instruments which are created or used as a medium of exchange by an company, but they are financed in which market? In the money market. They are financed in the money market, yes or no? But when we talk about the capital market, there are other instruments which are issued by company like shares, जिसके ऊपर हम interest देते हैं, and dividends, जिसके ऊपर हम डिबेंचर देते हैं, right? शेयर जिसके हम डिविडेंड, शेयर जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, और डिविडेंड जिसके ऊपर हम डिबेंचर्स देते हैं, राइट? एक्चुअली राइट? हाँ, रॉन्ग? क्यों रे? ओ लिटरली गलत हो गया. सो एक्चुअली इफ यू सी, there are various other instruments like the equity shares on which dividend is paid. There are debentures or the debt instruments which are being issued. There are deposit receipts which are being issued, which are traded in the market, but these instruments will not be traded in the money market, because these instruments are traded for a period of more than 1 year. These instruments are traded for a period of more than 1 year, like bonds, debentures. कोणाचं पडलंय? थँक्स. ओसीएम मध्ये खूप गरज होती याची. कोणाचा पडला? ऍक्च्युली तारे काय गर तुझ्या, तू लिटरली किती हसती आहे ग? हाउ दिस पॉसिबल ऍक्च्युअली? चलो. सो when we talk about fund requirement, these instruments of, अच्छा रसगुल्ला तर का तोंडात ठेवून टाकील, कशा असते मग मी बघतो. तू क्या भालेले हंसाला तू? अब जो हंसेगा ना ऐसे रख दूंगा ऐसे मुंह में ऐसे, फिर हंस के बता. वो मालूम है घान इसलिए तो रखने का है, घान है मैंने. इधर ध्यान दे, दे इकडे दे ना निशा, कोई बात करने वाला तो उसके लिए अच्छा है. हाँ थोड़ा ध्यान ध्यान से देखो ना तो. सो when you talk about fund requirements, either they are okay. So when we talk about equity shares, when we talk about preference shares, when we talk about debentures, when we talk about bonds, these are instruments which are traded in a market which are for a longer period of time, which is called as the capital market. And this instrument are traded in the capital market with the intention of buying the capital assets or meeting the fixed capital requirement of a company. On the same note, let's move ahead with the discussion of the types of financial market. The financial market can be classified as money market and capital market. पहले हम हर एक type of market की meaning देखेंगे. ए जूलिया, पहले हम हर एक type of market के meaning देखेंगे. Then we'll be looking in detail the features of the type of the market. Then after looking in the features, we'll also be looking into the various participants of the type of market we have. The financial market is classified as money market and capital market. So funds which are raised, where the funds are raised for a period of less than 1 year, what kind of market it is called as? Money market. Fix ना? नाही तर तिकडे पण असं उलटच करतो मी येतात तुम्ही. And
Market where funds are raised for a longer period of time are called as capital market. In the money market, we have call money market, certificate of deposit market, treasury bill market, commercial bill market, and commercial paper market. And in the capital market, we have the government or the gilt securities, industrial securities market, that is primary market and secondary market. Now, what is primary market and secondary market? Again, in the industrial security, the capital market. I guess I have told you about this primary market and secondary market. याद करो थोड़ा. फाइनेंशियल मार्केट हमने देखा था इकोनॉमिक्स में. करो मत, पूछूंगा मैं किसी को भी. बताओ. बताओ जल्दी. किसको पूछूंगा मैं? Yes, what is primary market and secondary market? हाँ बघ गायत्री बुक मध्ये बघून वाच असं. बोल, what is primary market, secondary market? काय? हाँ साक्षी देवकते नाही चौधरी. What is primary market? What is secondary market? साक्षी निजुरा काय? ओ असं. चलो प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज लक्ष द्या. Primary market and secondary market. When we talk about primary market and secondary market, whenever securities are issued for the first time, whenever securities issued by the company are traded for the first time, that market is called as primary market. Okay, so जब कभी भी किसी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज जो है पहली बार जो इशू की जाती है और ट्रेड की जाती है, ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट. फिर सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ? जो सिक्योरिटी जो ऑलरेडी इश्यूड है और उनकी वापस से जो ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. व्हेनेवर शेयर्स आर इश्यूड फॉर द first time, that is called as an IPO, and in case of an IPO, that IPO will be done under which market? Primary market. Are you getting my point? Are you getting my point? What is an FPO? Further public offer. Means a company which has already made an IPO is making another issue of shares. Now that second FPO will not be issued under primary market or secondary market. Primary or secondary? Primary or secondary? Primary or secondary? तुमने लिटरली मीनिंग लिया, वो एक्चुअली समझ गई. आईपीओ हो या एफपीओ हो, सिक्युरिटी तो पहिली बार इश्यू हो रहे हैं ना, तो प्राइमरी मार्केट में ही आएगी. असं कसं नाही, असं इधर ध्यान दो. प्राइमरी मार्केट मतलब क्या और सेकेंडरी मार्केट क्या, इकडे लक्ष द्या. चाहे आईपीओ हो, एफपीओ हो, चाहे आईपीओ हो या एफपीओ हो, सिक्योरिटीज तो पहली बार इश्यू हो रहे जो इश्यू किए जाएंगे. फ्रेश इश्यू है ना वो. Is it an old issue? No. Is it an old issue? The answer is no. Either it is IPO, either it is FPO. It is a fresh issue of shares. वही FPO को वापस बाइंग सेलिंग होती है, that is done under secondary market. समझ में आ रहा है? एक्चुअल मीनिंग समझ में आया सबको? जब कभी भी सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, either it is IPO or either it is FPO, doesn't make a difference. It will be traded under primary market. जब कभी कंपनी ने शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये अगर पहली बार कंपनी अपने इशू कर रहे हैं, पहली बार a fresh issue will always be under the primary market. Either it is IPO, FPO, it doesn't make a difference. Don't confuse IPO primary, FPO secondary market. Even FPO is a fresh issue. That fresh issue will be under the primary market. But in secondary market, जो shares already issue किए गए हैं, उनकी बाइंग सेलिंग हो रही है, देन दैट इज सेकेंडरी मार्केट. अब रिलायंस कंपनी का शेयर है, उसका आईपीओ तो जब धीरूभाई अंबानी थे तभी हुआ होगा. वही शेयर को अभी वापस मार्केट में बाइंग सेलिंग हो रही है,
स्टॉक एक्सचेंज पे. नाउ दैट इज अंडर सेकेंडरी मार्केट, दैट इज नॉट अंडर प्राइमरी मार्केट. एक कंपनी ने जो शेयर ऑलरेडी इशू किए गए हैं वही शेयर्स को जब मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है 2 बार 3 बार 4 बार जितने भी बार, दैट इज अंडर सेकेंडरी मार्केट. लेकिन जब कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करते हैं दैट इज अंडर द प्राइमरी मार्केट. राइट, चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेडिंग money market. Starting with the first heading, money market. Now what is the meaning for money market? A market, Harbhajan Singh. So market where the securities are traded for the period of less than 1 year, it is called as money market. Money market is that market where the fund requirements of short term are met. Money market is a market for lending and borrowing of the funds for short term. Underline. It is a market where lending and borrowing of the funds takes place for a short period which varies from 1 day to 1 year. Underline. Also, the financial instrument traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. So, can I say the instrument traded under the money market are liquid assets? The answer is yes, they are liquid assets. That means these instruments can be readily convertible into cash. And that to be without any loss. Without any loss का मतलब क्या है? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए का है तो वो कन्वर्ट करके आप उसके 100 रुपए ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ अर्जेंसी है, पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं. अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए का है मनी मार्केट में उसके आपको 100 रुपए मिल जाएंगे. ओके. ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द मार्केट can be converted into cash without any loss or time of value. It is an important part of the financial system that helps in fulfilling the short term and very short term requirements of the companies, banks, financial institutions, government agency, etc. Right? It is a market for financial assets which are close substitutes for money. Which are close substitutes for money. The instrument like commercial paper, liquid treasury bills, etc. are traded in the money market. तो जब कभी भी पैसे की ट्रेडिंग ऐसे वक्त के लिए होती है for a period of less than 1 year, such kind of market are called as money market, and money market are highly liquid market. Money market are highly liquid market. Now let's talk about the features of money market. Definition clear है? The market where the instruments are traded for a period of less than 1 year, from 1 day to 1 year, such kind of market are called as money market. Money markets are mainly required for meeting up the short term fund requirements of a business concern or a government or any other institution. Now let's look into the features of the money market. Any doubt in the meaning or definition of money market? Already being seen. हमने already so economics में देखा है तो इसमें इतनी problem नहीं जाएगी. Now the features of the money market. What are the different features of the money market? Features थे क्या economics में? Economics में features थे? Economics में features थे क्या? नहीं थे. Okay. Role of money market है शायद. Role of money market and role of capital market. Now here we'll have the features of the money market. The fund borrowed and lent in a money market are for short term. जो fund borrow और lend किए जाते हैं, they are done for a period of short term. The maximum period for which the funds are traded in the market is called as 1 year. Maximum time period for which the funds are traded is 1 year. The funds borrowed and lent in the money market are short term, and the maximum period for which the funds are traded in the money market is for 1 year. तो ये feature में main feature क्या है? Underline करो. 1 year. What is the main point? 1 year. Money market में fund trading कितना time period के लिए होती है? 1 year. Second point. It is a wholesale market for short term debt as the transaction volume is large. Wholesale market for short term debt. It is a wholesale market for short term debt. Short term debt यानी debt मतलब वही, right? इस market से जब हम पैसा borrow करेंगे वो short term debt होगी हमारी. Now there is difference between short term debt and long term debt. Balance sheet पे current liabilities, बरोबर, and the long term liabilities. जो current liabilities होती है, साल की जो liability होती है उसे हम अलग head में लिखते हैं under the head current liabilities. Yes or no? Right? Used, outstanding, है ना? याद है? Used, unused, outstanding, बरोबर, liability में लिखते हैं. Unused current asset में लिखते हैं, हुले outstanding में नहीं लिखते, गए मारते रहे final account में.
आइज कहाँ है बोलना जाने के लिए एक्चुअली सॉरी. ट्रेडिंग may take place over the telephone after which written confirmation is done by emails. In such kind of market, the trading may be done by telephone. The trading may be done by telephone. Participants of the money market, participants अच्छे से करो adjustment जरा पक्के करो एकदम. Participants of the money market include RBI, commercial banks. अब इसके participant कौन है? RBI, commercial bank, mutual fund, financial institution, primary dealers and corporate. These are all the participants of the money market. There is an impersonal relationship between the participant of the money market. Impersonal का मतलब क्या है? Personal का मतलब impersonal. What is personal relationship, Jayant? Yes. What is personal relationship? So what is impersonal relationship? Impersonal relationship क्या है? There is an impersonal relationship between participants of the money market. Impersonal relationship म्हणजे एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है between the different participants of the money market. नाती गोते घरी. व्यवसाय म्हणजे व्यवसाय. पहिले ऍडव्हान्स फिर काम है ना. पहिले पैसे मग काम तोपर्यंत नो काम. Money market has no geographical area, that is there is no fixed place for carrying out the transaction. Business transaction को carry out करने के लिए कोई geographical area नहीं होता. It is just an arrangement. These markets are just arrangement where the investors and borrowers meet for the fund requirements. The instruments of the money market can be converted easily into cash and or have a very short maturity periods. More returns on the investment is also low. Now but obvious है अगर आप इन्वेस्टर हो, ये सारे अपने कांशुक्ले, मंगरुलकर, नलगिरकर, कोटेकर, चश्मा गाला दिसणार नहीं एक्चुअली. सो ये सारे जो है इनके पास पैसा है. Now they want to invest their funds. Now there are two types of market where they can invest their funds. कोटेकर का अगले साल लगीन है ना. कोटेकर अगले साल कोटेकर का लगीन है. सो कोटेकर को शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने हैं. कांशुक्ले का भी पीएचडी के आगे एचडी करना है तो 35 साल तक वो पढ़ाई करने वाली. शी हैज अ लॉन्ग टाइम फॉर लगना है ना. पहले वो सीए करेगी, फिर वो पीएचडी करेगी, फिर वो एचडी करेगी. हाउ एचडी मेकअप पार्लर राइट. सो शी टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. बट हमारे तेजस्विनी को अगले साल लगीन है. मला लगीन करावं पाहिजे राइट. नेक्स्ट ईयर तेजस्विनी का लगीन है और गायत्री को अभी 35 तो मतलब बहुत अभी हाफ सेंचुरी मानी, अभी फुल सेंचुरी की तरफ जाना है और 17 साल बाकी है. क्या बोली साक्षी? नो कमेंट्स. तो हमारे तेजस्विनी को अगले साल शादी करनी है. 17 आहेत ना भरलेले. 17 नाही तर एखादा काय क्लास मध्ये असतो 16चा तर मागोड होऊन जाते लगेच. इलीगल नहीं जमता. ब्राह्मण में बिल्कुल नहीं करने का इलीगल, सब लीगली करने का, नथिंग इलीगल. हाँ तो हो रहा ना, मेरा फीचर भी हो रहा ना. अभी लास्ट पॉइंट ये खरे वगैरे छोड़ता नहीं. मुद्दे पे ध्यान दो. गायत्री गायत्री सर तुम्ही हे चुकीचं करत. मला पण पुढच्या वर्षी लग्न करायचं. तुम्ही असं कसं माझं नाव घेतात 35 मध्ये. हेच भांडण चालू आहे ना ऍक्च्युअली है ना किरण. किरण ऍक्च्युअली ना खरं सांग 30 म्हणते ना ती. आय नो बघ तिला 35 म्हणलं तिला राग गेलाय. मी पण पुढच्या वर्षीच करणार म्हणे. तो गायत्री का एक्चुअली नहीं तो लिटरली ऐसा अपन इमेजिन करो ना कि 35 तक समझ लो हमारी गायत्री शादी करेगी और हमारी तेजस्विनी अगले साल शादी करेंगी. अब तेजस्विनी के पास फंड्स है, सेविंग्स बहुत सारे, एफडी है, बहुत सारी सेविंग्स है. डैडी उनके जॉब करते हैं ना, जॉब करते हैं ना. हाँ जॉब करते हैं. डैडी उनके जॉब करते. अपने डैडी जॉब करते हैं. हाँ जॉब करते. उनके डैडी भी जॉब करते. दोनों के डैडी जॉब करते. बहुत सारी सेविंग है. तो अब सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है भाई. अब तेजस्विनी की शादी अगले साल है तो अगले साल शादी है तो वो पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. गायत्री को अभी बहुत टाइम जाना बाकी है. 16-17 साल अभी बाकी है लगने को. तो ऐसे केस में उनके पिताजी उनके फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करेंगे?
कॅपिटल मार्केट में और इनके पिताजी काय इन्व्हेस्ट करेंगे ऍक्च्युअली. आला ना तुला कन्सेप्ट क्लिअर. बरोबर बघ तू पण लक्ष दे असं तुझी कन्सेप्ट क्लिअर होतं असं. सो funds are traded in capital market and funds are traded in money market. Now my question to you is पैसे पे रिटर्न कहाँ आता है. रिस्क है तो इसको बोलते हैं बरोबर. अब मनी मार्केट में पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए और कैपिटल मार्केट में तो इनके पिताजी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न ज्यादा है या उनके पिताजी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनके बाबा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाबा ना ओके बाबा 320 160 नो सॉरी कम आउट. इनके बाबा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इज मेकिंग फॉर शॉर्ट टर्म और उनके पिताजी कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म. इनके बाबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म और उनके बाबा बाबा बैग शिप हैव यू एनी बुल. यस सर 3 bags फुल. तो उनके बाबा इज इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड. Whenever funds are invested for a longer period, the returns which we get on the investment is also the investment which we get are also high. But whenever the funds are invested for a short period, whenever the funds are invested for a short period, those funds give us the less return. अब comparatively जब इनके बाबा ने इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए की है बेटी की शादी की, ए दायमा तेरी शादी नहीं होने वाली लेकिन ध्यान तो दे इधर. मतलब क्या है? हाँ अरे बहुत खुशी हुई मेरे को. बोला अंदर ला आया क्या. देखो बाबा ब्लैक शिप हावी ने वुल लेके आ गया. देखो सिर पे वो. अरे और जहां गायत्री के पिताजी ने फंड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है वहां पे रिटर्न ज्यादा होंगे. व्हेनेवर फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अ मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. अरे क्या लगा क्या है हाथ पे. अरे झगड़े क्या यार झगड़े उगड़े कर रहा है यार. तो डॉन है यार समझ क्या करे यार. So whenever funds are invested for a short term of less than 1 year, the return which we will getting is low, and whenever the funds are invested for a longer period, the return which we will get is high. तो गायत्री के बाबा को उनके शिप पे बहुत ज्यादा वूल है और इनके बाबा को उनके शिप पे बहुत कम वूल है. तो the return which we get is low and the return which we get is very high. I know very punched but bear with me. Next point, major segments of money market. The different major segments of the money market are call money market, certificate of deposits, treasury bills, commercial bill market and commercial papers. Some important participants हम देखेंगे कल. Thank you so much.